Hello and welcome back to the PR course by Public Media Solution. It's a different day, it's a different suit. I'm just not going to lie to you anymore. ये same ही day है, different tie, same suit, but new information for your PR campaign. आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज का जो हमारा ये गोल है, is to make you understand the different types of PR agencies in India. तो yeah, let's just jump right into it. राइट जनरली इंडिया के अंदर आपको दो टाइप्स की पीआर एजेंसीज मिलेगी. द फर्स्ट टाइप ऑफ पीआर एजेंसी दैट यू विल फाइंड विल बी अ प्रेस रिलीज एजेंसी. प्रेस रिलीज एजेंसी क्या करती है? दे विल रीच आउट टू यू और यू कैन रीच आउट टू देम एंड दे विल टेल यू दैट यू नो आपका जो न्यूज है एज एन अनाउंसमेंट. नाउ प्रेस रिलीजेस आर ओनली डन फॉर अनाउंसमेंट्स. मैंने नया शॉप लॉन्च किया, मेरा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मेरा ओपनिंग है, मेरा दुकान बंद हो गया. एनी अनाउंसमेंट दैट यू आर मेकिंग इज कम्स अंडर पार्ट ऑफ अ प्रेस रिलीज. हाउएवर इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इन इंडिया. जब भी आप कोई प्रेस रिलीज एजेंसी से बात करते हो, व्हाट दे विल यूजुअली सजेस्ट यू इज दैट आप आइए हमारे पास, यू पे अस एन एक्स अमाउंट एनीवेयर बिटवीन 20-25 grand एंड वी विल पब्लिश योर आर्टिकल इन 150 डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स. राइट, यहाँ पर उन लोग आपको बताएंगे वी विल पुट यू इनटू बिजनेस स्टैंडर्ड, वी विल पुट यू इनटू ANI, वी विल पुट यू इनटू लोकमत, XYZ फलाना एवरीथिंग. एक प्रॉब्लम है इसमें जो ये लोग आपको नहीं बताएंगे. द प्रॉब्लम दैट कम्स विद अ प्रेस रिलीज इन इंडिया is that it comes with a disclaimer on the bottom of it. Now this disclaimer will essentially tell you that this article that you are reading has no involvement of any journalist from our media end. This content was sponsored or paid for by a particular agency or a particular group or individual. ये जो disclaimer आता है, this helps you lose a lot of credibility that you are trying to establish from the media. राइट, तो हाउ डू वी टैकल दिस प्रॉब्लम? एक कट के बाद फाइंड आउट करता है. We as Public Media Solution over the past 10 years have established a network of 40,000 journalists in India. 40,000 journalists. The approach that we take is to create your stories in public interest. मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ, बड़ा आसान सा प्रोसेस है. Let's say you come on board as a client with Public Media Solution. The way that we usually take your project on board, first level पे आपका एक conversation होता है हमारे in-house journalist के साथ. Our in-house journalist has an experience over 8.5 years with 3 different media platforms. That means she has a knowledge to create your story in a very good public interest. Self promotion नहीं, a story which is well received by an audience. अगर कोई न्यूज़ पढ़ रहा है तो उसको क्लिक करने का मूड हो, वैसी टाइप की पहले स्टोरी बनाई जाती है. Once that story is created, the second phase of this project is to start pitching to the media. Now I understand बहुत लोग बोलेंगे यार मेरी स्टोरी पिकअप नहीं हुई तो क्या? बहुत एजेंसीज पिच करती है, आपकी स्टोरी पिकअप होती है नहीं होती है. Here is where our USP lies as an agency. Because we have such a big network of journalists, they're very good friends that we have in the media. When we approach you with a plan in mind, it is very thought out. हम लोग आपको रैंडमली आके ये नहीं बोलते कि आपको हम लोग 150 डिफरेंट मीडिया हाउसेज में डाल देंगे. We take a very systematic approach, saying that let's start off with a smaller media house, something let's say like the Pioneer. Build it up to something like Financial Express. Build it up to something like Times of India. Right? इसे हम कहा, by the minute you reach Times of India, that is creme de la crux of the PR industry in India. Best of the best. अगर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक आर्टिकल लिखा जा रहा है बाय द जर्नलिस्ट ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, that is what a PR agency should be capable of doing. So here is where a basic difference between these two types of PR agencies lies. It is very easy to have an agency buy media for you and then sell it to you at a higher price. Not very difficult to do, it's trading. But to have an agency which has the capability of giving you organic content which people will like to read, content which you would like to show people, saying that look how Financial Express has written my story, look how Z News has written my story. Obviously, as a PR agency, our goal is to put you in a good light, put you in a place where you feel like कि हाँ चलो
I have a platform to speak about the work that I've done, the journey that I've been on, and the plans that I have in the future. And that is something that we as an agency are very, very good of taking care of. ये है एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन अ प्रेस रिलीज एजेंसी एंड अ पब्लिक रिलेशंस एजेंसी. So the next time you are approached by a PR agency or you are approaching a PR agency, उनको पूछो कि क्या ये कंटेंट आप जो डाल रहे हो, क्या ये डिस्क्लेमर्ड कंटेंट है, क्या ये ऑर्गेनिक कंटेंट है, ये क्यों डिस्क्लेमर जैसा जा रहा है. Why is my story not good enough for an organic content? Maybe the PR agency doesn't have the network in place. आओ ढूंढो कि पब्लिक मीडिया सोल्यूशन कर पाएगी ये काम आपके लिए. Arsh can do this for you even if you don't go through us. At least be aware of the money that you are paying for to a PR agencies, because it is very easy to get distracted कि मेरा नाम न्यूज़ में आने वाला है. बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है लोगों के अंदर. But there is a right way to do things, and the right way, the correct way, is the traditional PR outreach method with an agency that can give you transparency for the media that you will be getting and how you will be getting it. Thank you very much for watching once again, and I hope to see you guys next time.